Are you from here? Just visiting. It's my last night actually. That's so many moments. एक रात में पूरी जिंदगी जी सकते हैं. Try करते हैं. हर पल जी ले तू अभी, हर लम्हा है जिंदगी. Magic in your eyes, there's magic in the air. तो कैसी रही जिंदगी? Every moment was magic. There's magic. Make every moment a magic moment. My journey of insurance and investments began at the same time when I invested in LIC SEEP. In this fast-moving world, SEEP can balance your funds with security and growth. SEEP will take care of the ups and downs of the market and will give you fruitful results so that you enjoy the ride. And when SEEP is with you, you can soar high. LIC's unit-linked insurance plan SEEP offers savings and protection so that you can soar high in your life. LIC, हर पल आपके साथ. Now, all you mind rockers out there, y'all are very savvy on the internet, we know that. So next up, we've lined up YouTuber Carrie Minati talking about how to break the internet, followed by author Amish Tripathi on learning in times of COVID. Lessons for the young. Take a look. He's not just India's biggest YouTuber, he is Asia's biggest YouTuber with over 30 million subscribers. When Carrie Minati uploads a video, the youth doesn't just listen to it or like it or laugh to it. It basically nods its heads in agreement and says, hell yeah. But you know what? Not everybody is happy with Carrie Minati's communication skills. The parents especially have its fair share bit of problems with his abuses ki bahut char. But then Carrie Minati would not be Carrie Minati, and he wouldn't have the army of fans that he did if he censored himself. We are thrilled to have with us on India Today's E-Mind Rocks, the voice of the youth itself, Carrie Minati. Welcome, Carrie Minati. How are you doing? I'm doing very good. Thank you for the wonderful introduction. How was this pandemic and this lockdown for you? This pandemic, when it started initially, तो ये ऐसा ही था, fantasy kind of, जहाँ पर सब लॉकडाउन हो गए हैं और सब मेरी जिंदगी जी रहे हैं जैसे मैं जीता हूँ. Which is normally I don't go out much. मैं अपने घर पे ही रहता हूँ and I work. That's it. तो जब ये शुरू हुआ, हाँ, तो जब ये शुरू हुआ, then starting में तो I was very, I don't know, एक excitement थी, एक obviously वो था कि थोड़ा सा panic था because everything was getting shut down. But at the same time एक एक्साइटमेंट थी कि अब एक कुछ नया फेज आ रहा है लाइफ का, एक नया कुछ डिफरेंट है ये, जहाँ पर यू कैन नॉट गेट आउट. बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया आई रियलाइज्ड कि ये तो हमारे साथ खेल रहा है, हमारे दिमाग के साथ खेल रहा है लिटरली. बिकॉज एक होता है कि तुम अपने फैसले से बाहर नहीं जा रहे हो, एक होता है कि तुम्हारे पास वो फैसले करने का ऑप्शन है ही नहीं. लेकिन अब इंस्टाग्राम पे क्या है, बिकॉज आई वॉज नॉट गोइंग एनीवेयर, ठीक है, एंड आई वॉज mostly at my house making videos and just repeating the schedule every day ना. So it just felt कि मैं अब क्या ऐसी क्या स्टोरी डाल दूं जिससे मैं अलग क्या दिखाऊं. There is nothing to show, right? Were you able to, I mean, create stuff for your YouTube channel? वो आसानी थी? See, YouTube is a very different game than Instagram. YouTube में क्या है ना, I realized कि since अब क्योंकि अब almost I think 2 साल होने वाले हैं since the lockdown began और पूरा pandemic को चालू है. So तब से लेकिन अब तक आई फील कि बहुत टाइम बदल चुका हूँ और मैं भी बदल चुका हूँ इन टर्म्स ऑफ कि कैसे मैं कंटेंट को देखता हूँ और कैसे मैं अपने चैनल को देखता हूँ. अर्लियर इट यूज्ड टू बी मोर लाइक कि हमें क्या करना है ना, हमें हर महीने, ठीक है, एक वीडियो निकालनी है जिससे लोग एंटरटेन हो. नाउ द पर्पस हैज चेंज्ड, ठीक है. नाउ आई एम मोर इनटू कि मैं ऐसा क्या बनाऊं जिससे ज्यादा इम्पैक्ट आए. क्या होता है ना, व्हेन यू आर एट होम ना, एक तो डिस्ट्रैक्शंस ऊपर से क्या है ना, तुम्हारे माइंड में एक बबल बन जाता है तुम्हारा कि कैसे वर्ल्ड तुम्हें परसीव करता है एंड एवरीथिंग. नाउ वो तब तक नहीं टूटता है अनटिल अनलेस तुम बाहर नहीं जाते हो, तुम लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते हो, तब वो ब्रेक होता है. बट क्योंकि पैंडेमिक था, यू कैन नॉट इंटरेक्ट विद एनीबॉडी, यू कैन नॉट गो आउट, तो तुम्हें वो पता नहीं. तो मेरा भी एक बबल बन गया दिमाग में. तो उससे क्या हुआ ना कि आई फेल्ट वेरी रिस्ट्रिक्टेड. आई फेल्ट कि एक ब्लॉक था मेरे दिमाग में. मतलब क्या होता है ना कि हमारे दिमाग में अपने आप ही रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है. बिकॉज आई फील हर क्रिएटर ना कि एवरी क्रिएटर इज वेरी इनसिक्योर. एवरी क्रिएटर, आई डोंट थिंक ऐसा कोई भी होगा. लाइक हाँ, लोग बोलते हैं कि नहीं, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन एवरीथिंग, दे आर, बट आई स्टिल फील कि हर क्रिएटर ना कहीं इनसिक्योर होता है अपने कंटेंट को लेके, अपनी चीजों को लेके.
जो कि आई थिंक ये लॉकडाउन काइंड ऑफ एक ब्लेसिंग था मेरे लिए, बिकॉज इट हेल्प मी ओवरकम दोज थिंग्स। जब आप बाहर जाते हैं तो कभी आपको लोग रास्ते पे लोग के बोलते हैं यार कैरी जस्ट टोन डाउन ऑन दी अब्यूजेस, यू नो, ये होता था पहले? आई मीन यू नो व्हेन यू वुड बी स्टेपिंग आउट, और वो स्पेशली अमंग लेट्स से द एल्डरली जनरेशन, द पेरेंट्स जनरेशन, व्हेन दे वुड रिकॉग्नाइज यू, वो होता था? सी, पहली चीज तो व्हेन आई एम लाइक, पहली बात तो कि जब ऐसी सिचुएशंस आती है ना, ठीक है, इट्स वेरी मतलब हाँ मजाक हाँ, मजाक वाली बात, ठीक है, बिकॉज व्हेन यू टॉकिंग ऑन ओके, सोशल हाँ मीडिया हाँ और मे बी कमेंटिंग ऑन हाँ सोशल मीडिया वर्सेस व्हेन यू मीटिंग दैट पर्सन फेस टू फेस ना, तो ऑब्वियसली, हाँ सो हाँ सपोज you hate someone on social media, yeah, if you don't agree with somebody हाँ, on social media, but that doesn't mean कि अगर या तुम उनसे फेस टू फेस मिलोगे तो उनको तुम पानी नहीं पूछोगे, या तुम उनको ये नहीं बोलोगे अरे यार हाँ, क्या चल रहा है, क्या हाल है, यू वोंट, ऐसा नहीं होगा, यू वोंट ग्रीट देम, राइट? तो आई फील कि या सोशल मीडिया और हमारी जो रियल लाइफ है उसके बीच में हमेशा एक फर्क आ जाता है। तो एट द एंड ऑफ द आई फील कि ज्यादातर लोग अप्रिशिएट ही करते हैं, ठीक है, एंड इफ हाँ दे डोंट हाँ। अटैक यू, ठीक है, वो ऐसे अटैक नहीं करते मुझे कि यू नो तुम ऐसे ऐसे करते हो, क्यों करते हो, दे आर नॉट ऑन माय नर्व्स और एनीथिंग। यू नो अभी रिसेंटली आपने एक बिग बॉस की रोस्टिंग की जिसमें आपने एनिमेशन भी यूज़ किया, एंड इट केम, इट्स अ वीडियो दैट यू वर्कड ऑन फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, इट्स योर लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन वीडियो। यू नो यू वांट टू टेल मी समथिंग कि व्हाई डिड यू डिसाइड टू डू एनिमेशन, एंड मोर इम्पोर्टेंटली नाउ तो यू आर वर्किंग इन बॉलीवुड, कैरी मिनाटी, आपको डर नहीं लगता टू रोस्ट ऑल दीज एक्टर्स? एंड आई मीन सलमान खान, पता नहीं आप नेक्स्ट टाइम यू कैन वर्क विद हिम ऑल्सो इन द नियर फ्यूचर, यू वर्क विद अजय देवगन, when is the day far when you'll work with Salman Khan? See, even if I work with Salman Khan, that doesn't mean कि मैं उन्हें हाँ ट्रोल नहीं कर सकता, and even if I am working with Ajay Devgan, that doesn't mean कि मैं उन्हें ट्रोल नहीं कर सकता. That is very different things, and these people, okay, they have a lot of knowledge in terms of how entertainment business works. So more मतलब like how much I have talked, I have realized कि इन लोगों को इतना कुछ पहली चीज तो फर्क नहीं पड़ता, and they understand कि entertainment is हाँ हाँ entertainment. So I don't mind. And coming back, what was the initial question? I just forgot. I am so sorry. ये मैं ये पूछ रही थी कि बिग बॉस आपने बिंज वॉच किया टू मेक दिस वीडियो, हाँ एंड देन यू हाँ डिसाइडेड कि एनिमेशन करना है। पहले बिग बॉस तो देखना ही सबसे बड़ी लाइक टास्क है, बिंज वॉच करना तो और बड़ा टास्क है, तो थोड़ा बताइए हाउ डिड यू डू दिस एंड व्हाई एनिमेशन? See, I'll tell you. So animation has been बचपन से it has been a big dream of mine कि I want to create something. I remember earlier days में ना, मैं मतलब जब तुम छोटे होते हैं ना, you see these cartoons, ठीक है, I I feel वो बहुत जरूरी है कि बच्चे कार्टून्स देखें, बिकॉज उनकी इमेजिनेशन बढ़ाते हैं, ठीक है, जब तुम बचपन में एनिमेशंस देखते हो तुम्हें बहुत मैजिकल लगती है सारी चीज, कि ये ऐसे क्यों है, ये क्या है, ये ऐसे क्यों कर रहा है, एंड एवरीथिंग, राइट? नाउ आई हैव रियलाइज्ड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू execute a project which is animated, because see, when it's real life ना, जब तुम real life में shoot कर रहे हो, you can improv, you can think about stuff, you can reshoot, you can take different shots जिससे maybe तुम्हारे content में थोड़ी और diversity आ सकती है, but animation needs to be हाँ जी, planned from ऑफ कोर्स। 0.001 seconds to till the end of 5 minutes, जितना भी है, ठीक है, it needs to be pre-planned everything. 2021 और 2020 I would say, ठीक है, I was in a position जहाँ पे I felt कि I was done with just maintaining my channel, just uploading for the sake of making my channel active. I needed more impact and I wanted to do things जो मैं शुरू से plan कर रहा हूँ. So I think अब नहीं करूँगा मैं तो कब करूँगा. So this was my moment when I करेंगे decided या that I need to do it, and surprisingly, I won't say surprisingly, but happily enough, मेरे जो skills थे वो writing skills थे वो match कर गए, and I was able to pull that off. So I just feel कि या बहुत जब तुम, and I think ये मेरा पहला project था animation में, and you learn a lot with it. So I'm pretty sure कि जो next वाला भी मैं जिस पे काम करूँगा ना, I think it would be 10 times much better.
अब Yeah. ये भी जो वीडियो है, ये जिस पे आपने इतना टाइम किया, ये भी आपने रात को किया बिकॉज आई सोर्सेस टेल मी कि यू ओनली स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम इवनिंग ऑनवर्ड्स और सुबह को आप सोते हैं. बेसिकली यू आर एन आउल स्लैश वैम्पायर. इज इट ट्रू? इज कैरी मिनाटी एट इट्स मोस्ट क्रिएटिव बेस्ट ओनली व्हेन द सन कम्स डाउन? See, it's not कि I am at my best when the sun comes down, but what happens is कि रात में ना ऐसे होता है कि रात में ना you have no distractions. There is nobody to disturb you. Nobody is knocking your door in every 2 minutes saying ये काम वो काम ये कुछ वो कुछ, and you have zero meetings. Now what happens is कि usually if I wake up in the day ना, ठीक है, I'll wake up, I'll freshen up. मैं बैठता हूँ, I'll have a coffee, I'll sit in front of my laptop. What will happen is कि मुझे कॉल आ जाएगा, ठीक है, किसी का, मे बी मेरे अभी घर पे रेनोवेशन चल रही है, सो आवाजें आती रहती है, ऐसा लगता है कि F1 रेसिंग हो रही है मेरे जस्ट ऊपर रूफटॉप पे, सो आई हेट दैट. तो रात का टाइम बहुत शांति वाला होता है एंड इट्स वेरी इजी टू गेट इनटू दैट जोन, क्योंकि क्या होता है व्हेन यू इन योर थॉट ना, और एकदम से वो थॉट ब्रेक हो जाए, तो एटलीस्ट 25 to 30 मिनट लगते हैं उस पे वापस आने के लिए. दैट टाइम आई कैन नॉट अफोर्ड. Are you from here? Just visiting. It's my last night actually. That's so many moments. एक रात में पूरी जिंदगी जी सकते हैं. Try करते हैं. हर पल जी ले तू अभी, हर लम्हा है जिंदगी. Magic in your eyes, there's magic in the air. तो कैसी रही जिंदगी? Every moment was magic. There's magic Make in every moment a magic moment. मुझे जॉब छोड़ा फिर भी सो कूल. ब्रो, नए चैलेंजेस नए मौके लाते हैं. अच्छा. सीरियसली राहुल, मेरा पूरा घर नाउ इट्स एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर. देख. वाओ. लेकिन पैसे? कुछ साल पहले दिवाली बोनस को इन्वेस्ट किया था. और अब तो है LIC का यूलिप प्लान निवेश प्लस. एक बार इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस से सुरक्षा का लाभ और मार्केट की बढ़त का फायदा दोनों पाओ. वन सेक राहुल. मैडम, यू आर डबल कूल. You started out as a gamer, Carrie. You uploaded, first video was you playing a video game. अब देखो तो लाइक ई स्पोर्ट्स और गेमिंग तो लाइक भौचार है. आई मीन इनफैक्ट मैं कहीं पढ़ रही थी कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन इट वाज द वीडियो गेम इंडस्ट्री विच ग्रू द मोस्ट. और अभी बात चल रही है कि भाई ओलंपिक्स में भी ई स्पोर्ट्स को लाया जाए. यू नो, डिड यू एक्चुअली इमेजिन गेमिंग वुड बिकम सो ह्यूज, यू नो, नाउ द वे इट हैज टेकन ऑफ, स्पेशली ड्यूरिंग लॉकडाउन एंड पैंडेमिक? See, I think उन लोगों के लिए ज्यादा सरप्राइजिंग होगा जो लोग गेमिंग इंडस्ट्री में नहीं, या फिर they don't indulge in video games. But he who has been gaming his entire life, ठीक है, ऐसे मुझे बहुत टाइम नहीं हो गया, बट पैदा हुए इतना टाइम नहीं हुआ है मुझे, बट I would say कि since the time I was conscious, I have been interested in video games. ठीक है, so for me, I feel अभी भी इंडस्ट्री as such explode नहीं करी है, ठीक है, because right now I feel अच्छा, okay, गेमिंग है, because मोबाइल गेमिंग श्योरली उसने एक टर्न लिया है और श्योरली उसने एक्सप्लोड किया है, ठीक है, एंड दैट्स जस्ट बिकॉज इसकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है. मोबाइल फोन सबके पास है एंड एवरीबॉडी कैन इंस्टॉल फ्री फायर और PUBG और कॉल ऑफ ड्यूटी. दैट्स व्हाई इट हैज ग्रोन टू दिस लेवल. नाउ अभी भी आई फील देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ गेमिंग इन इंडिया दैट नीड्स टू ग्रो. फॉर एग्जांपल, देयर इज अ PC gaming community, there is a console gaming community, there is a Nintendo gaming community which is like very very small right now. Now these things will grow जैसे जैसे
PCs या फिर consoles और accessible होंगे. You, Carrie Minati, during the last 12 months, went on a set of a film where worked with Ajay Devgan on a film called Mayday. अब ये acting, is this full-time profession? And is this, can I say Carrie Minati has been bitten by the acting bug? What was that experience like? Okay, so me and acting. Okay. हाँ जी. I wouldn't say कि मैं और acting हमेशा अच्छे दोस्त रहे हैं. हाँ. मतलब मेरे साथ ना थोड़ा weird scene है with acting because क्या है ना, acting is a skill that you need to invest time in and you need to learn that, you need to experience that, and you need to carry the same pain that character carries, right? So many carries. But I would say like for the longest time, like I have given so many auditions over the years. ठीक है, इतने auditions दिए and it was never like कि that is my primary focus, but it's just कि let's see क्या होता है. अच्छा. Everybody Okay, everybody is okay. excited. Auditions in terms Auditions of किसके? Like ads के, films किसके? not ads. I don't as a generally like audition for ads, but in films and web series and for maybe different platforms as well. ठीक है, तो उनकी तरफ से भी like there are like casting agencies जो they approach you. I know it's बहुत लोगों का ultimate goal होता है, they want to go into Bollywood, but I just feel कि जो मेरा style है and which the type of content and the style of content that I like, I even discussed that on the sets of Mayday with a lot of people that my style is very different, I believe, and my primary objective is I can never be satisfied अगर मैं सिर्फ एक actor हूँ. I need to be behind everything. ठीक है, it should be my way. That's how I want it. क्या होता है ना, as you're growing your YouTube channel or maybe as a creator you go growing your audience, ठीक है, you realize कि तुमसे ज्यादा ना किसी को नहीं पता what is best for your audience. वो तुम्हें ही पता है. And for me, अगर मैं behind the scenes नहीं हूँ ना, तो मुझे front पे रहने में भी इतना confidence नहीं आएगा. Because वो चीज़ मेरी नहीं है, मैंने नहीं लिखी है. If I was to ask you to look back on your life, and it's 22 years of your life, what is the one moment for you that is truly good news? That's something that gives you hope, or maybe something that made you happy. Is there one moment that you always go back to and say, yeah, that was a good time? जब तुम वो moment जी रहे होते हो ना, you don't really feel कि हाँ अभी मैं खुश हूँ. But when you look back, then you feel happy. So I'll describe your moment when I was 18. ठीक है, I had the pleasure to interview Tom Cruise, even if it was for what, just one question, और उसके अंदर भी I was very nervous और मैंने बहुत fumble कर दिया. But still I feel it was very like when I look back at it, it feels great. मैंने कहा यार मैं 2018 में I was 18 and I met Tom Cruise. Yeah. Great. I am now going to move to the most exciting thing, which I'm really now I'm waiting to hear responses, which is a rapid fire round. And Carrie Minati has to be at his most honest and his most wittiest best in this, okay? So the first thing is, which is your favorite YouTube channel other than yours? कौन सा YouTube channel favorite है? Recently, I've been watching this channel called Best Food Review Ever. It's something like that. So this guy, what he does is goes around the world eating different kind of foods. And he'll even eat a raw goat or something. 3 essential qualities that a YouTuber should possess. 3 essential qualities. Patience. Perception of how you look at your content. That really matters. And the third thing could be what would you call never giving up? Persistence, basically. हाँ, PP हो गया. 3 Ps हो गए. Okay. 3 Ps. Noted. If you could change one thing on YouTube, what it would be? Now, if I'm running YouTube, I'm not thinking about कि मैं company को कैसे पैसा बनाऊं, because I'm also a creator. ठीक है, at heart. So अगर मैं वो बिल्कुल perspective वो छोड़ दूं कि मुझे पैसा बनाना है, and if I look at from a completely creator's perspective, I would say कि मैं वैसा type of content ज़्यादा promote करवाऊंगा जो ज़्यादा raw और natural, rather than content which is more ad friendly and which is more just suitable for the
family friendly audience, right? Because that's Okay. basically वो थोड़ा commercial side हो जाता है, and I feel ज्यादातर लोग क्या है ना सुन नहीं पाते हैं उस चक्कर में, because they feel कि ऐसे type of content promote होता है, then मैं जो हूँ, मेरी जो personality है, I think उसमें कुछ गलत है. So I वो perception जब जाता है ना तो वो गलत है, उसका गलत impact आता है. I feel तो YouTube को थोड़ा raw और natural content which is more relatable, not in terms of just you know basic things, but जो literally तुम्हारे इंसान की सोल को पकड़ता है ना, they should promote that. Noted. The app that you use most after YouTube, I mean YouTube तो आप use ही करते होंगे, but what's the most second most app that you use? I've been using Audible lately. Just when I cannot read, I try कि मैं जो books है वो सुनूं. Who was your first crush? Kamal R. Khan. Worst habit of Carrie's Minati's. Biting nails. What's your guilty pleasure? ASMR videos. I mean, okay. ठीक है, मैं डिफेंड भी नहीं करूंगा अपने आप को, जो सोचना है सोचो है. One thing you will never see on Carrie's channels. Probably me twerking. Favorite artist? I mean, by artist I mean obviously a singer, because you are a rapper yourself. So I wanted to know. Singer. It's very hard to. Johnny Cash. Okay. One word to sum up the pandemic / lockdown. One word. Frustrating. Acha, is there a favorite curse word that Carrie Minati has these days, जो आता रहता है बीच में? Do you want me to say that? I won't say it. अरे come on, अभी YouTube पे कह सकते तो यहाँ क्यों नहीं कह सकते? नहीं, because ये भी YouTube पे ही जा रहा है. पिछली बार जब मैंने वो शब्द कहा था तो I was banned. First word that comes to your mind when I say Facebook. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Okay. Twitter. Don't say now, Jack. Larry Bird. Okay. Kunal Kamra. Political comedy. TikTok. Real life comedy. Trolls. Love them. You love them? Wow. Okay. I mean, you'll engage with them and you'll love them as well. Noted. What's been your magic moment? बहुत लोगों को लगता है ये एक रेस है, बहुत लोगों को लगता है कि अगर हम वीडियोस नहीं डालेंगे तो हमारी बोट डूब जाएगी, ठीक है, which is I believe is not true, ठीक है, but many people have that pressure कि अगर मैं आज नहीं डालूंगा या मैं एक हफ्ते में नहीं डालूंगा, एक महीने में नहीं डालूंगा तो नैया ढह जाएगी मेरी. Now I have kind of changed that perception अपना, ठीक है. So I have realized कि जितना तुम ज्यादा absorb करोगे ना उतना तुम अच्छे बनोगे प्रोडक्शन में, ठीक है. अगर तुम प्रोड्यूस ज्यादा करोगे, absorb कम करोगे, then you just repeating yourself, काम की तरह उसको ले रहे हो तुम. Now when you absorb, let's suppose तुम 70% absorb करते हो और उस 70% में से I would say you would take what 8 to 9% जो तुम सारे चीजें तुमने absorb किया over the month और over 2 months, तुम वो सारी चीजों से इंस्पायर होके एक प्रोडक्ट बनाते हो अपना. Now that's when I say I'm in that magical moment. I'm in a transitional period जहाँ पर I am trying to transform myself because that's what I like to do. I don't like to remain. मैं एक चीज पे फोकस, मतलब एक चीज पे फिक्सेट नहीं होना चाहता कभी भी. And that's what I did with the recent video as well with Big Boss. I brought animation, I brought skits जो I would say काफी unique थी in terms of अभी जो चल रहा है. So that this is my magic moment. Thank you so much, Carrie, for joining us on India Today's Mind Rocks. Really appreciate for your time, and please keep producing all the wonderful YouTube videos that you do. Thank you so much. Thank you so much. It's been my pleasure. Thank and you. I really love the background you have behind you.
Really amazing. Speak a lot. Thank you.